श्रीघटिकाचल हनुमत स्तोत्रम। श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अत्यंत ही चमत्कारी तथा महाशक्तिशाली स्तोत्र है घटिकाचल हनुमत स्तोत्र। यह स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। जो भी भक्त इसे नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं उनकी मन की मुराद शीघ्र ही हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस कलयुग में केवल हनुमंत लाल जी महाराज ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पुकार को शीघ्र ही श्रवण कर लेते हैं एवं भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते हैं। तो महावीर हनुमंत लाल जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पावन स्तोत्र को आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। श्री घटिकाचल हनुमत स्तोत्रम। ध्यानम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरद्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं। पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरद्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं
समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं
वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं
वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। शङ्खचक्रधरं देवं
घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं
वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणि शोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबलः। श्रीघटिकाचल हनुमत स्तोत्रम संपूर्ण।